Hello everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है Asma and here we talk about real styling. So today I'll be teaching you a flawless party makeup at home and that too with very minimal products. So let's get started. So today I'm going to wear this beautiful velvet suit. So let's start with the makeup. So to have a flawless base first, like I mentioned in my last video, we have to do our preparation very good. So we have to hydrate our face in the best way possible. So first I'm starting with this toner. और जब आपका टोनर अच्छे से सूख जाए एंड देन वी विल यूज दिस मॉइस्चराइजर. सी कितना सारा मैंने लिया है और आपको भी ऐसे ही लेना है. Now we will apply primer. As my skin is normal, I have combination skin. My T-zone is oily. T-zone means that this area and this area. This area is oily. So I used this cream primer, not a silicone based primer. आपको ना स्किन को प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है. बस इस बात का आपको ध्यान रखना है. अगर आप स्किन को प्रिपेयर करने में कंजूसी करोगे प्रोडक्ट्स की, then you can't achieve a flawless base. Now I will do color correction, though I don't have too much dark circles, but I will do because कोई भी फाउंडेशन हो वो ज़रा सा ऑक्सीडाइज होते ही हैं. So I'm using this lipstick. It's a pink tone lipstick, little bit, because I don't have too much. If you have too much dark circles, then you need to use orange shade lipstick, because I don't have too much, so I'm using this pink based. Okay, wherever you have dark spots, there also you can apply this. Now I will wait for this to get dry, then I will blend it. You don't have to blend it completely. You have to keep it a bit also. It has to be visible. Okay, blend a bit only so that no harsh line is there. Now I will use concealer to cover these areas. जहाँ जहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाया था पिंक शेड, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगी. ये हमको फाउंडेशन से पहले करना होता है. I will blend it with this brush only. Actually I will dab it, not blend completely. I will dab it. Can you see the coverage of this concealer? This concealer is really good. It's from L'Oreal Infallible. It's really a good concealer, seriously. Can you see my face is glowing, though I haven't used any highlighter, nothing. I've just started my makeup and you see the glow. This is the glow just because of the skin preparation that I have done. See, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो मक्खन की तरह मेल्ट हो रहा है लिटरली. सो स्किन प्रिपेयर करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकअप. Like I mentioned in the beginning, we are going to have a flawless base with minimal products. So I'm going to do my full makeup with concealer only. I'm not going to use any foundation. Now I have taken a little foundation on my brush and I'm going to apply it on my neck, because I can't use concealer on my neck because concealer थोड़ा expensive होता है. So I'll use foundation on my neck area. नेक कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट अवॉइड योर नेक एरिया, वरना आपका फेस और नेक एकदम अलग अलग लगेगा. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्यूटी ब्लेंडर. इट्स अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज टू ब्लेंड एवरीथिंग एंड टू स्मूदन आउट एवरीथिंग.
Now I'm going to use this liquid blush because अभी मैंने कोई भी पाउडर प्रोडक्ट नहीं लगाया है, और पाउडर प्रोडक्ट लगाने से पहले आपके पास जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो वो आपको यूज़ कर लेने चाहिए, बिकॉज वंस यू अप्लाई पाउडर प्रोडक्ट्स you can't use any liquid products then. I will apply this here. Today I'm not applying on my nose because I'll do contouring. Like I told you in my last video, that sun-kissed look is for the day look only. Now I will blend it. You have to blend very softly actually, not too hard. इसके बाद भी मैं पाउडर ब्लश लगाऊंगी. ये बस थोड़ा ये स्किन के अंदर लगता है ना, बहुत तो नेचुरल लगने लगता है. इसके बाद भी मुझे अप्लाई तो करना पड़ेगा क्योंकि पाउडर के नीचे फिर ये लाइट हो जाता है. आज मैं कंटूरिंग करूंगी क्योंकि नाइट मेकअप है और मुझे अपने फेस को पतला दिखाना है, नोज को भी पतला दिखाना है. सो नाइट मेकअप पे मैं हमेशा कंटूरिंग करती हूँ टू मेक माई फेस लुक स्लिमर. नाउ वी विल यूज पाउडर. हम वहाँ पाउडर लगाते हैं जहाँ पे रिंकल्स आते हैं, लाइक व्हेन वी लाफ, सो नियर द माउथ एरिया एंड नियर एंड अंडर योर आईज, जहाँ जहाँ पे हमको रिंकल्स पड़ते हैं या आपको रिंकल्स पड़ते हैं, आपको वहाँ पे पाउडर से सेट करना चाहिए. नाउ आईज ऑल्सो. नाउ आई विल डू माई आईज. सो वी हैव टू use powder over eyes because eyeshadow are also in powder form, so that's why I have applied powder so that it blends smoothly. Now by the time it all gets absorbed into my skin, I will do my eye makeup. So I have decided to give a little smoky, not too much, just little bit. But first I will create my crease. For that we need a nude shade, and I don't have a nude shade actually, so I will use a little brown here. This is my transition shade. You can do. जब भी हम आई मेकअप बाद में करते हैं अपना फेस करने के बाद, तो भी हमें यहाँ पे पाउडर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता रहता है, तो वो इसके ऊपर गिरेगा और हम लास्ट में जब हमारा आई मेकअप हो जाएगा तो हम उसको क्लीन कर देंगे, तो उससे आपका बेस खराब नहीं होगा. Now I will take a darker brown shade here. Now a little black on, little black here. First I will dab it, then I will merge it. Do you see? Now I will blend it. The same we will apply under our lids also. Same shade. Now we will apply this highlighter shade which is nude in color here under our brows before filling the brows. This is very very important to highlight this area, our brow bone area. Now I will apply this bronze shade which matches my suit color in the inner corner. Now I will dust off this powder. Very light hands, we have to dust it off. जितना आपके स्किन को चाहिए होता है वो उतना absorb कर लेता है. Now and we have to dust off the extra. Abhi I will do this. Now we will apply a very white or nude color
shimmer or highlighter on the inner corners. Now I will apply eyeliner. Today I want to apply eyeliner in my inner corners also, like our ups too. So बहुत time हो गया था and मुझे लगा कि look अच्छा लगेगा इसके साथ. Now I'm applying kajal. I apply kajal only on the waterline. Then I blend it with eyeshadow, dark brown eyeshadow, and I only apply this kajal on my waterline and above also. यहाँ पे अप्लाई करने से हमारी आंखें बड़ी लगती है और ना स्मोकी आई में इट्स मस्ट बिकॉज वरना ये वाइट वाइट एरिया दिखता है. नाउ आई विल टेक ब्लैक आई शेडो. फर्स्ट आई विल अप्लाई ब्लैक आई शेडो exactly near the waterline. Then I will apply dark brown to take it further. Now see. Now I have taken dark brown eyeshadow. I will apply it. ऐसा करने से बहुत स्मूथ लगता है ये और एकदम ये फाउंडेशन में मर्ज हो जाता है. अगर आपको और भी ज़्यादा मोटा करना है अपना नीचे का काजल या फिर कलर, तो आप एक और थर्ड शेड उठाओ जो इससे भी लाइट हो, इससे भी लाइट ब्राउन हो. नाउ आई विल कंप्लीट दिस माय इनर कॉर्नर लुक. नाउ आई विल फिल माई ब्राउज बिकॉज ब्राउज के बिना बहुत इनकम्प्लीट लग रहा था. I like fuller brows actually. सबका अपना अपना होता है. मुझे फुलर ब्राउज पसंद है बहुत. मेरे फीचर्स को इन्हांस करती है एंड पतली ब्राउज मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती है. That's why I applied thicker ones, and I also apply here. The front I keep broad as compared to the arch. Now I will blend this. Here we take spoolie and we will blend this now. Now I have blended my brows. अगर आपको पतली पसंद है तो आप पतली कर सकते हो. Now I will define my brows today because it's a party makeup. Now I will blend it. You have to blend it very carefully. This. Now I will do contouring of my nose and my cheekbones. We have to take any dark brown shade for contouring. This is to hide my double chin. Now I will take a blush and I will blend this contouring because now it's very visible. So we have to blend this into the blush. So to make your face look slimmer, we apply the blush in this direction, like in these areas. Because I'm wearing this orange tone suit, so that's why I'm not applying any pink blush because pink blush doesn't go with orange shade and it's more of a brown shade actually, my blush. You have to merge it till the hairline. As you can see, this contouring has crossed my cheek bone area, so I will fix it. Now I will dust off the extra with this brush with the light hands.
Now I will apply highlighter here to highlight this area. Here also. Now I will set this with toner again. Let it get dry. It will melt your makeup into your skin, seriously, and you will shine. जब तक ये dry होता है तब तक let me apply mascara. I always apply 2 coats of mascara with the gap of 5 minutes because that way you can achieve you very thick lashes. Now I have applied 1 coat. Then after some time I will apply the second coat. Never forget the lower lashes, seriously. Now this is my second coat. See, लग रही है ना कि जैसे मैंने fake lashes लगाई हो. So now it's time to do my lips. So first we will lip line our lips. It's very very important. I always use a very dark color lip liner when I do party makeup because I outline my lips a little extra. So that merges with my skin and it looks natural. See, I have outlined my lips a little extra on the upper side because I want to give a fuller look. Now I will fill this. As again, I'm wearing orange, so I will go for nude because if I apply any bright shade, it will be too much. So that's why I have kept my blush also in a nude tone, a brown tone, and then also my lips. After I'm done with my complete makeup and hairdo, then I will apply gloss over it because it's a night look and gloss looks amazing. Now can you see कितना flawless base मेरा बना है बहुत ही minimal products के साथ. You can see that. See, I only used concealer and the normal eyeshadow palette with just 3 shades, and then kajal and the blush. We all have that. And can you see? So it's all about your skin prep. See, I'm confused about my hairdo. मैंने सोचा था कि मैं एक बन करूँगी टाइट और स्लीक बन क्योंकि कपड़े मेरे टू मच होने वाले हैं एंड ज्वेलरी सो आई डोंट वांट टू डू मच ऑन हेयर सो लेट मी डिसाइड एंड विल बी राइट बैक विद माय कंप्लीट लुक हाय सो हियर्स माय फाइनल लुक if you like my look so please like and subscribe for more such videos